Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 18th of December. The session will be quite interesting. In this video we will be talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to UP. Then we will be talking about President of India Draupadi Murmu ma'am has granted assent to Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024 to replace Aircraft Act of 1934. Then Union Minister H.D. Kumaraswamy has unveiled India's green steel taxonomy. Then Ministry of Defence has signed a 13,500 crore rupees deal with Hindustan Aeronautics Limited. Then we will be talking about snake bite. It has been now declared as a notified or notifiable disease. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. Then weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly. That helps you in your better understanding and learning of the topic. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Then students, let's start with national affairs. The first news is PM Narendra Modi was on a visit to Uttar Pradesh on 13th of December 2024. During his visit, he has inaugurated 167 multiple development projects that are worth around 5,500 crore rupees in Prayagraj, UP. These projects, they included 10 new over road bridges, then flyovers, permanent ghats and riverfront roads will be established here. Interesting thing and an important one here is Sahayak, right? Sahayak, right? This Sahayak, right? So PM Modi has launched this Sahayak. This is an AI chatbot that is basically a part of the Digital Mahakumbh initiative that is aimed at assisting the pilgrims and visitors at the Mahakumbh Mela 2025. And this Sahayak AI chatbot, it will be available 24/7 in 11 Indian languages. Right? We know that Mahakumbh is going to be held in 2025, right? Can you tell me which is the name of the new district or new temporary district that has been established by UP recently, right? It will be a temporary district for this Mahakumbh that is going to be held. Tell me the name of that new district. This is an important question. We have discussed this earlier, so it will be a quite good revision for you all. Right? And this Kumbh Mela, this is a religious pilgrimage that is celebrated 4 times over a course of 12 years. Right? And this time is scheduled to be held in Prayagraj, UP. Next is President of India Draupadi Murmu ma'am has granted assent to Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024 to replace the Aircraft Act of 1934. Right? This notification has been issued by the Ministry of Law and Justice, correct? And the primary aim of this change is basically to enhance safety and streamline the regulatory processes, as well as to improve the aviation sector and infrastructure management in India. Let me show you here this Bharatiya Vayuyan Vidhayak 2024. This was introduced in July 2024 and passed in August 2024 by Lok Sabha, the aim of which is to modernize the India's aviation regulatory framework, eliminating any redundancies in it, and also to enhance the ease of doing business in the aviation sector. Correct? Next is Union Minister H.D. Kumaraswamy has unveiled India's green steel taxonomy.
What is this green steel? Green steel is the steel that is produced using the green source of energy, or the energy that does not create any pollution. Even the government of India is promoting these green steel, and it is also incentivizing the manufacturers as well as the consumers that they should opt for the green steel. So Union Minister H.D. Kumaraswamy, Union Minister of Steel and Minister of Heavy Industries and Public Enterprise, has unveiled this taxonomy of green steel for India. This was during an event held in Vigyan Bhavan in New Delhi, and with this, our country, India, became the first country in the world to launch a taxonomy for green steel. Now, this question becomes important, so take a note of it. Question can be asked that which is the first country in the world to launch a taxonomy for the green steel? It is our country, India. Correct? Take a note of this. Then, as per the new framework, the green steel will be defined in the terms of its emission intensity, and it has set a limit of 2.2 tons of carbon dioxide emission per ton of the finished steel. Next here you can see the limit is 2.2 tons of carbon dioxide emissions per ton of the finished steel. Next is Ministry of Defence. They have recently signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited, and it is for the procurement of 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet. Right? These will be for Indian Air Force. Right? The contract is worth 13,500 crore rupees. Right? And as they will be procured from Hindustan Aeronautics Limited, so we can say that this will promote the Atmanirbhar Bharat in India and Make in India initiative. Correct? So, it is your Ministry of Defence that signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited. Apart from this, remember, the Cabinet Committee on Security has also approved the acquisition of 100 additional K9 Vajra self-propelled howitzers to enhance India's defence capabilities along the line of actual control with China. Right, this LAC, it is a line between India and, or it is the boundary between India and China. Next, if we talk about Hindustan Aeronautics Limited, who is the chairman and managing director? Dr. D.K. Sunil. Where is the headquarter? The headquarter is in Bengaluru, Karnataka, and it was established in 1940. Next is Ministry of Health and Family Welfare has announced snake bite as a notifiable disease. Now, what is this notifiable disease? First of all, you should know this. Any disease that must be reported to the public health authorities by law, and this reporting helps these public health officials to monitor the disease, track its outbreak, right, and also provide the timely action to prevent and control such disease. Right, so it is a notifiable disease, and it is Ministry of Health and Family Welfare that has announced now snake bite will be a notifiable disease. Take a note of this. Also, the reason for declaring this, snake bites are life-threatening conditions that can lead to severe outcomes, including death, long-term health complications, and permanent disability in some cases. And to prevent that from happening, it has been declared as the notifiable disease so that the authorities can take action as soon as they find about it. Next is your Ministry of External Affairs and DOP, that is Department of Post. They have recently renewed the Memorandum of Understanding for 5 years, and this Memorandum of Understanding is basically to ensure the continued accessibility of passport services through the Post Office Passport Seva Kendras. Right, this agreement will ensure that the citizens, that is the Indian citizens, will keep receiving the high quality passport services at their nearest post office. Under this plan, the number of passport seva kendras will rise to 600 across India by FY29. This will also improve the access and convenience for the citizens. These post office passport seva kendras, they were launched in 2017, and it has been instrumental in providing passport related services specifically in rural and underserved areas. As of now, there are 442 post office passport seva kendras across India, and it is expected to increase it to 600 by FY29. Next is banking and finance. Bob Card launched Tiara credit card for women. Right, this Tiara credit card, this credit card has been launched by which bank? It has been launched by Bank of Baroda, and this Tiara credit card, it has been specifically designed for women. Right, apart from this, remember, this credit card will be working on RuPay network. It will provide rewards such as
benefits in various categories such as travel, dining, lifestyle, entertainment, and health. There will be a joining fees for this, that is 2499 with GST. Moving on, if we talk about Bob Card Limited, it is a who is the chairman and or who is the managing director and chief executive officer of Bob Card? Ravindra Rai M, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Next is Bharat Pay. They have launched the fraud protection plan, that is Shield, to safeguard the users from digital transactions. I repeat, Bharat Pay. This is a financial technology company for merchant payments, and they have launched a fraud protection plan by the name Shield. This will safeguard the users from fraudulent unified payment interface transaction, that your fraud UPI transactions. It will offer users making their first UPI transaction with the Bharat Pay application of 30 days of complimentary fraud protection from amount up to 5000 rupees. Right, I repeat, this will offer users making their first UPI transaction with Bharat Pay application, right, 30 days of complimentary fraud protection for the amounts of up to 5000 rupees. And after this period, users can continue this service for an affordable fee of 19 rupees per month. This will cover computer fraud, phishing attack, unauthorized transactions resulting from phone loss, etc. Right, and any individual can report these, or any users can report these fraud or these attacks, correct, for losses incurred up to 10 days before reporting. Next is economy and business. Kerala and Adani Port signed an agreement for the development of Visenham Seaport. Correct. So it is government of Kerala and it is Adani Port. They have signed this agreement where they will be making sure that this Visenham Port Limited, right, this will be at par with the international standards. Right. It will be better infrastructure will be here. Correct. And also it is expected that all the facilities here will be top notch. Next is awards and recognition. 2024 UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation was given, right? 2 conservation projects from India in this list. So first of all, UNESCO, where is the headquarter of UNESCO? It is in Paris, France, correct? So UNESCO has announced the winner for the Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. That means in Asia or Asia Pacific region, the countries that are working towards protection of their cultural heritage. Correct. This year, a total of 8 projects from 5 different countries in the Asia Pacific region were there, right? And they have been awarded with different awards, right? For example, in REU Bathhouse Restoration Project, that is in Tokyo, Japan, won the award for excellence, that is the highest honor of UNESCO Heritage Award. Then total 2 projects from India were honored with the 2 different heritage awards, that is Abhyasthaswara Temple, that is in Tamil Nadu. This is Abhyasthaswara Temple, that is in Tamil Nadu. It was honored with the award of distinction. And Sri Bairamji Jiji Bhoy Parsi Charitable Institution, right? It is in Maharashtra. It was awarded with the award of merit. So award of distinction to Tamil Nadu Temple and award of merit to this charitable institution. Correct? Take a note of this. Then if we talk about UNESCO only, who is the Director General, can you tell me, of UNESCO? Audrey Azoulay. There are 194 member nations and it was established in 1945. Next, Air India has won the Good Design Award, Australia 2024 and FTE Award. I repeat, we are talking about Air India, right? We know that Air India is the India's leading airline that is based out of in New Delhi, and they have received 2 distinguished global accolades. Correct. This is for their transformation and dedication to servicing and providing better services to the customers. Correct. Here remember, this first award is your Good Design Award Australia, right? I repeat, Good Design Award Australia 2024, and the second is your FTE Award. This Good Design Award Australia, correct, this was awarded basically, why? This award recognizes the innovation and design excellence of the airline in flight product, which features various tableware, Slovakian lead-free glassware, luxurious linens, premium mattresses, and so on. Right? Then if we talk about this FTE award, the second award, this was basically is
for various services such as, here remember this award, correct, it is for best cabin service in Central slash Southern Asia and best food and beverages in Central and Southern Asia award to Air India. Take a note of this. Next is appointments and resignation. NHPC Chairman and Managing Director Rajkumar Chaudhary gets additional charge of SJVN's Chairman and Managing Director. I repeat, Rajkumar Chaudhary, the Chairman and Managing Director of State-owned Hydropower NHPC Limited, has now been given the additional charge of the Chairman and Managing Director of SJVN, that is Satluj Jal Vidyut Nigam Limited in Himachal Pradesh. Moving on, next is science and technology. ISRO has successfully tested the CE-20 cryogenic engine in Tamil Nadu. Right, this was successfully tested at the sea level hot test of its cryogenic engine, that is CE-20. Right, and it was tested where? It was tested at the ISRO Propulsion Complex in Mahendragiri in Tamil Nadu. Correct. And this cryogenic technology, it utilizes the rocket's propellants that are stored at extremely low temperature, such as your liquid oxygen, liquid hydrogen. Then this cryogenic engine, that is CE-20 cryogenic engine, it is designed indigenously by ISRO's Liquid Propulsion System Center in Bengaluru, Karnataka. It has been certified for the Gaganyaan mission with a thrust capacity of 20 tons and it is set to be upgraded to 22 tons in the upcoming C-32 stage engine. Next, for ISRO we know who is the chairman, Dr. S. Somnath, headquartered in Bengaluru, Karnataka, established in 1969. Moving on, next is Manatsu Space Technologies has delivered the I-Booster green propulsion system to DRDO. I repeat, Mumbai, Maharashtra based Manatsu Space Technology startup, right? They have recently delivered the I-Booster green propulsion system. This is given to DRDO. This achievement follows 4 years of extensive research and development on this. And I-Booster system, it was designed for satellites that are weighing between 100 to 500 kilograms and plays a vital role in critical satellite operation. This system is powered by hydrogen peroxide, that is H2O2. This is a fuel that is offering a safer, more eco-friendly alternative to the conventional toxic fuels. Right? If we talk about Manatsu Space Technologies, where is the headquarters? It is in Mumbai, Maharashtra, and Tushar Jadhav is the CEO here. Next is China's Long March 2D rocket has successfully deployed 5 experimental satellites into space. These 5 satellites, they were launched from Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, and it was the 63rd space mission of China in 2024. Right, take a note of this. Moving on to sports. KIWG, what is this? KIWG, it is Khelo India Winter Games, correct? This was the 5th edition of Khelo India Winter Games, scheduled to be held in Ladakh and Jammu and Kashmir. And Union Minister Mansukh Mandviya, right, he's our Union Minister of Youth Affairs and Sport, has announced this 5th edition of Khelo India Winter Games that will take place between January 23rd and to 25th of Feb in 2025, and it will be held in the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. This will kick off the Khelo India season with the Youth and Para Games in Bihar in April 2025 and University Games later this year. Next is Obituary. Renowned Gujarati singer and Padma Shri awardee Purushottam Upadhyay has recently passed away. As you can see him in the picture, he passed away at the age of 90 in Mumbai, Maharashtra. In 2017, he was honored with Padma Shri Award, that is the 4th highest civilian award of India. Next is books and authors. Union Minister Gajendra Singh Shekhawat has launched New Bharat, Modi's Vision and Development 2019 to 2024. Right, this was launched at the Constitution Club in New Delhi. This event was attended by Navneet Sehgal, the chairman of Prasar Bharati. This book is authored by Ravi Prashar and published by Hindustan Times. This book, it showcases the developmental initiatives and various schemes implemented under the Prime Minister Narendra Modi's leadership that was implemented. Right? Next is important days. National Energy Conservation Day observed on 14th of December, and it is to raise awareness about the importance of saving energy
and it encourages the individuals, industries, and institutions to adopt efficient and sustainable energy practices for a better future. This NECD, National Energy Conservation Day, it is promoted by Bureau of Energy Efficiency that comes under the Ministry of Power. Next is, here you can see the National Energy Conservation Awards, right? Maharashtra has secured the first prize in Group 1 of the State Performance Award. Karnataka won the second prize. Dalmia Cement Bharat Limited from Odisha won the first prize in cement sector under industry category. Renigunta Junction Railway Station in Andhra Pradesh won the first prize in the transport category under the railway station sector of NECA 2024. So these are some awards, so do remember. Moving on, 53rd edition of Vijay Diwas was observed on 16th of December. This Vijay Diwas is observed basically to create awareness about the historic win of the Indian Armed Forces against Pakistan in 1971 Indo-Pak War. Right? This day also paid tributes to all those martyrs for both India and Bangladesh who lost their lives on the line during the war. Correct? This year in 2024, it was the 53rd edition of Vijay Diwas that was observed. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next is, which veteran actor will be honored with the 54th Dadasai Phalke Lifetime Achievement Award at the 70th National Film Awards ceremony? So who is that actor? Mithun Chakrabarti. Right, take a note. He is a very famous actor. Right, and he will be honored with the Dadasai Phalke Lifetime Achievement Award. This is for his contribution to the Indian cinema. Right, and he will be the 54th recipient of this award. This award was announced by Ashwini Vaishnav, who is our Union Minister of Information and Broadcasting. Also, he will be presented with this Dadasai Phalke Award during the 70th National Film Award ceremony that is scheduled to be held at Vigyan Bhavan in New Delhi. Right. Apart from this, in 2024, Mithun Chakrabarti was also honored in 2024 with Padma Bhushan Award, that is the India's third highest civilian award. Next, who was jointly awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2024 with American development biologist Victor Ambrose for the discovery of microRNA. So Gracie Bruce Rovkun, right? They both were awarded with Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2024, and this is for the discovery of microRNA. Take a note of this. Next is, who was jointly awarded the Nobel Prize in Physics 2024 with British Canadian computer scientist Geoffrey E. Hinton for foundational discoveries and invention that enable machine learning with artificial neural network. So John J. Hopfield along with Geoffrey E. Hinton, they both were awarded with the Nobel Prize in Physics by the Royal Swedish Academy of Science in Stockholm, Sweden. Here there was a prize, also remember, amount of 11 million Swedish kronor. Right? Next is, who among the following were jointly awarded with the Nobel Prize in Chemistry? So all three of them, David Becker, Demis Hassabis and John Jumper, they all three of them were honored with the Nobel Prize in Chemistry. Next, Hong Kang from South Korea won the Nobel Prize in which category? So Hong Kang, he won the Nobel Prize in the field of literature. Correct? And not he, she. Hong Kang is a woman and she became the first South Korean to win a Nobel Prize in literature and second Nobel laureate from South Korea. Moving on. One more thing, if I ask you who was the first person from India who was awarded with the Nobel Prize in Literature? Rabindranath Tagore. Right, and that too in 1913. Next, who is the only IPS officer selected for the 2024 IACP 40 under 40 award? So, Preetpal Kaur. Preetpal Kaur, she is an IPS officer, right, and she is an IPS for the FAC district of Nagaland, and she is the only Indian selected for the 2024 IACP 40 under 40 award.
right? And here remember, Preetpal is among the 40 police officers who have been selected from 16 countries around the world. Next, who has been recently honored with the Lifetime Achievement Award by the Asian Human Resource Development Academy? So, Muthuval Karunanidhi Stalin, right? That is M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, right? He was honored with the Lifetime Achievement Award by the Asian Human Resource Development Academy. Next, which airport has recently won the Platinum Award under the Facility category at the Society of Energy Engineers and Managers Awards in New Delhi? So, which is that airport? It is Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. This award, it highlights the airport's dedication towards creating a greener and more sustainable airport facility. Next, which country's non-governmental organization, that is NGO, was awarded with the Nobel Peace Prize 2024? It is Japan, right? Japan country's NGO was awarded with the Nobel Peace Prize. What is the name of that NGO? Nihon Hidankya, right? Next, which among the following is the winner of the Sverges Riksbank Prize in Economic Sciences in the memory of Alfred Nobel? Remember, this award is also known as the Nobel Prize in the field of economics, right? Hence, it is known as Sverges Riksbank Prize. So, who was awarded with this Nobel Prize in economics? All three of them: Darren S. Moglu, Simon Johnson, and James A. Robinson. They were awarded with this award. Next, who has been recently honored with the 2024 UN High Commissioner for Refugees Nansen Refugee Award Global Laureate? So, Sister Rosita Milesi, right? She's a Brazilian nun, 79 years of age, a lawyer, a social worker. She was honored with the UN HCR Nansen Refugee Awards for Global Laureate, and this is basically for her effort for providing the rights, dignity to the refugees and the migrants of different nationalities in Brazil. Next, who has recently been conferred with the 48th Vayalar Ramavarma Memorial Literary Award for his novel Kathu Kadavu? So, Ashokan Charulvil. I repeat, Ashokan Charulvil was conferred with the 48th Vayalar Ramavarma Memorial Literary Award. Next, which state has recently bagged the first prize in the category of Best State in the 5th National Water Awards? So, it is the state Odisha. Take a note of this. And Odisha won the first prize in the category of Best States here. Next, who became the second woman from India and the 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024? So, Neetu Lawrence David, correct? Along with the South Africa's legendary cricketer A.B. de Villiers and former cricket team captain Sir Alastair Cook were inducted into the ICC Hall of Fame for the class 2024. Alastair Cook at 113th position, Neetu David at 114th position, and A.B. de Villiers at the 115th position. Next, students, is our homework section. The first question is, tell me, recently Prime Minister Narendra Modi launched a insurance scheme for women. What is the name of that scheme? First. Second, tell me recently tell me DP IIT, they have partnered with an e-commerce in order to promote the startup ecosystem in India. What is the name of that e-commerce? Third, tell me recently which individual became the first individual to cross the $400 billion net worth mark, and he's also the richest man in the world. So these are your homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 18 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट टू यूपी. देन हम बात करेंगे भारतीय वायुयान विधेयक 2024 टू रिप्लेस एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934.
देन हम बात करेंगे HT कुमार स्वामी, इन्होंने अनवेल किया इंडिया का ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। देन हम बात करेंगे स्नेक बाइट को भी एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों करा गया, इससे फायदा क्या होगा एंड ये स्टेप क्यों लिया गया है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज हम रेगुलरली अपलोड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके एंड आपको दूसरे सोर्स तक ना जाना पड़े, आपको सारा ही कंटेंट हमारे पास मिल जाए हर तरीके से। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी विजिट पे थे टू यूपी 13 दिसंबर को, एंड इसके दौरान इन्होंने 167 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया दैट आर वर्थ 5500 करोड़ रुपीस इन प्रयागराज यूपी। इसमें से हम 10 रोड ओवर ब्रिजेस की बात करेंगे, फ्लाईओवर्स, परमानेंट घाट्स, रिवर फ्रंट रोड्स को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे सहायक, ये एक AI चैट बॉट है जो कि लॉन्च किया गया है। ये पार्ट रहेगा डिजिटल महाकुंभ इनिशिएटिव का। हम जानते हैं अभी 2025 में महाकुंभ होगा प्रयागराज यूपी में। अच्छा, जो महाकुंभ से रिलेटेड ही बता दो, अभी यूपी में एक नई टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है यूपी के द्वारा। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ क्या है एंड कौन से नंबर की वो डिस्ट्रिक्ट रहेगी। टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज के लिए, राइट। जो कुंभ होगा यहाँ पे बनाई जाएगी सिर्फ इसी को हैंडल करने के लिए, उसका नाम क्या रहेगा। ये जो आपका कुंभ सहायक AI चैटबॉट है, ये 24/7 अवेलेबल रहेगा एंड 11 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने ग्रांट किया असेंट टू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को, जो रिप्लेस करेगा एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। इससे क्या होगा, एक तो सेफ्टी बढ़ेगी, राइट। जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, एविएशन सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है एविएशन सेक्टर में, राइट, उसको और बेटर करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा एंड जो भी रेजिडेंसीज हैं एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेक्टर में, करेक्ट, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये लाया गया है। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर HD कुमार स्वामी, इन्होंने अनवेल किया इंडिया का ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, राइट। एंड इंडिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को यहाँ पे लॉन्च किया है। इससे होगा क्या कि एक तो देखो, सबसे पहले ये ग्रीन स्टील क्या होता है। ग्रीन स्टील आपका स्टील ही होता है, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी से बनाया जाता है, जिसमें ग्रीन फ्यूल को यूज किया जाता है टू मेक दैट स्टील। करेक्ट, यहाँ पे ग्रीन स्टील का टर्म क्या है कि इट हैज़ अ लिमिट ऑफ 2.2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर टन फिनिश्ड स्टील। मतलब 2.2 टन आपके, इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होना चाहिए पर टन ऑफ स्टील जो बनाया जाएगा, तो हम उसको ग्रीन स्टील कंसिडर कर सकते हैं। एंड ग्रीन स्टील का मतलब ही ये हो गया कि आपका जो फाइनल स्टील है उसको क्लीन एनर्जी से बनाया जा रहा है। इवन यहाँ पे सरकार के द्वारा भी कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इवन सरकार यहाँ पे आपका सब्सिडीज भी प्रोवाइड करा रही है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं एंड जो कंज्यूमर हैं कि वो लोग यहाँ पे ग्रीन स्टील को अडॉप्ट करें एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेगुलर स्टील। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
करेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन स्टील विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एमिशन इंटेंसिटी। इट हैज सेट अ लिमिट ऑफ 2.2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने साइन किया 13,500 करोड़ रुपीस की डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फॉर 12 सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स, राइट। तो 12 सुकोई 30 यहाँ पर आएंगे, 13,500 करोड़ रुपए की ये डील रहेगी। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने 100 K9 वाजरा सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स को भी यहाँ पे लाने की बात की गई अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक बाउंड्री होती है आपकी, पार्टीशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो 100 आर्टिलरी गन्स आएंगी वर्थ 7,000 करोड़ रुपीस, correct, and it will be the third such contract to L&T, as the first contract of 100 artillery guns has already been delivered in 2021 and the second contract of 100 guns received in 2023 and ये आपका थर्ड सच कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? डॉक्टर DK सुनील। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में एंड 1940 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने डिक्लेयर किया स्नेक बाइट को कि एक नोटिफाइबल डिजीज होगी। देखो नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर ये नोटिफाइबल डिजीज बन गई है तो नोटिफाइबल डिजीज क्या हो गई कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी यहाँ पे बीमारी होती है जो कि नोटिफाइबल डिजीज है, राइट, उसको रिपोर्ट किया जाएगा पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को बाय लॉ। इससे क्या होगा, जो ऑफिशियल्स हैं, वो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, वो मॉनिटर करेंगे इस डिजीज को, इस डिजीज के आउटब्रेक्स को ट्रैक करेंगे एंड टाइमली एक्शंस प्रोवाइड करेंगे एंड उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। सम ऑफ द नोटिफाइबल डिजीज इंडिया में है जैसे लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कॉलेरा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो अभी स्नेक बाइट को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है नोटिफाइबल डिजीज। स्नेक बाइट को क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग आपकी स्नेक बाइट हो सकती है, राइट। इससे आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इवन परमानेंट डिसेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिली है कई केसेस में। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर किया स्नेक बाइट को एज नोटिफाइबल डिजीज। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने अभी एक MOU रिन्यू करा है 5 साल के लिए टू एनहेंस द पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास। देखो ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास, इनका काम क्या है, बेसिकली जो पासपोर्ट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराना टू द सिटीजन्स। अभी अगर हम देखें एज ऑफ नाउ 442 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रास हैं, इनको बढ़ा के 600 करने की बात की गई बाय FY29। इससे बेटर सर्विसेज मिलती हैं सिटीजन्स को, कन्वीनियंस रहती है, करेक्ट। एंड ये इंश्योर करता है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको हाई क्वालिटी पासपोर्ट सर्विसेज मिले नियर द पोस्ट ऑफिसेस। एंड इसको 5 साल के लिए MOU को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। हम बात करेंगे टियारा क्रेडिट कार्ड की। ये रुपए पे वर्क करेगा, राइट। ये वीमेन सेंट्रिक कार्ड रहेगा, वीमेन्स को एम्पावर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसकी एनुअल ज्वाइनिंग एंड एनुअल फी रहेगी 2499 एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? बॉब कार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहीं पे अगर हम देखें तो बॉब कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? रविंद्र राय एम। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं भारत पे। इन्होंने लॉन्च किया फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान को, जिसका नाम रहेगा शील्ड। ये शील्ड क्या है? अभी तो इनिशियली तो यहाँ पे 30 डेज तक ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद भारत पे पर 19 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे चार्ज रहेगा इसका। एंड इसके अंदर क्या होगा, कोई भी फ्रॉड होता है आपके साथ, कोई भी फ्रॉड पेमेंट हो जाती है, राइट, या फिर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, किसी ने आपको स्कैम किया, तो 10 दिन तक, राइट, आज स्कैम हुआ तो आने वाले 10 दिन के अंदर अगर आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पे क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, करेक्ट। ये भी याद रखेंगे, 10 डेज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं कि अभी जो आपके फ्रॉड हैं, करेक्ट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्कैम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। UPI बेस्ड जो स्कैम्स हैं, तो UPI ट्रांजैक्शंस में जो स्कैम्स हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे ये नया शील्ड लॉन्च किया गया, जो कि है फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अडानी पोर्ट्स, इनके द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया कि जो विजहिंजम पोर्ट है, राइट, आई रिपीट, विजहिंजम पोर्ट जो है सी पोर्ट है केरला में, इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि यहाँ से जो ट्रेड है वो और बेटर हो सके, राइट, एंड ट्रेड करने में यहाँ पे लोगों को सुविधा हो सके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। हम बात करेंगे यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। एंड यहाँ पे 2 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जो इस लिस्ट में रहेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। एंड ये अवार्ड दिया गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी आपके हेरिटेजेस है, राइट, उनको कंजर्व करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया अंडर यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, राइट। यहाँ पे टोटल 8 प्रोजेक्ट्स रहे 5 डिफरेंट कंट्री से, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इंडिया के। इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो याद रखेंगे इनारी यू बाथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये टोक्यो जापान का प्रोजेक्ट है। इट हैज़ वन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो कि हाईएस्ट ऑनर है यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड का। पहली चीज़। सेकेंड चीज़, 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे इंडिया से। अबतस्यावेश्वर टेम्पल जो तमिलनाडु में है, इसको ऑनर किया गया इस टेम्पल को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से। एंड श्री सर बायराम जी भॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इनको सम्मानित किया गया अवार्ड ऑफ मेरिट से। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे जो कि इंडिया की है। यूनेस्को का अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? वो है ऑड्री ऑजले, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। 194 मेंबर नेशंस हैं एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। एयर इंडिया वन द गुड डिज़ाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया एंड FTE अवार्ड, राइट। ये देखो जो गुड डिज़ाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया ना, द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द इनोवेशन एंड डिज़ाइन एक्सीलेंस ऑफ द एयरलाइंस विस्टा वर्व इन फ्लाइट कंडक्ट, राइट। यहाँ पे बेटर सर्विसेज हैं, बेटर टेबल वेयर हैं, लग्जूरियस लाइनिंग्स हैं, प्रीमियम मेटर स्टॉपर्स रहेंगे, करेक्ट। एंड जो सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है एयर इंडिया के द्वारा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका गुड डिज़ाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया 2024। एंड FTE अवार्ड्स की बात करें तो ये यहाँ पे ग्लोबल सर्विसेज बेटर प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट कैबिन सर्विस रहती है यहाँ पे, बेस्ट फूड एंड बेवरेज रहता है एयर इंडिया का, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। अगर मैं बात करूँ एयर इंडिया के चेयरमैन कौन रहेंगे, वो है नटराजन चंद्रशेखरन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 1932 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। NHPC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार चौधरी गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का। आई रिपीट, चेयरमैन ऑफ NHPC कौन है? राजकुमार चौधरी। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया किस चीज का? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो अभी इसरो के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इन तमिलनाडु, राइट। एंड ये जो इंजन रहेगा ये बेसिकली यूटिलाइज करेगा रॉकेट प्रोपेलेंट को, जो कि स्टोर किया जाएगा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे, जैसे सच एज लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि मिक्स रहते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स टू यूज इट एज अ फ्यूल। ये जो आपका इंजन है ये सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया एट द अपर स्टेज ऑफ द 6 LMV3 मिशन। इवन ये जो आपका मिशन क्रायोजेनिक इंजन रहेगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसको गगनयान मिशन में यूज किया जाएगा। अभी इसकी थ्रस्ट कैपेसिटी 20 टन की है एंड आने वाले टाइम में ये बढ़ के 22 टन हो जाएगी इन द CE-32 क्रायोजेनिक इंजन, जो कि अगला अपडेटेड वर्जन रहने वाला है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मनात्सु स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने डिलीवर किया आई बूस्टर ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम को टू DRDO। तो ये जो आपका मनात्सु स्पेस टेक्नोलॉजीज है, ये आपकी एक डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड, एंड इन्होंने ये आई बूस्टर ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम दिया है DRDO को। आफ्टर 4 years ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये डिलीवर किया गया इनके द्वारा। एंड जो ये आई बूस्टर रहेगा ना, इसको डिजाइन किया गया फॉर सैटेलाइट्स जो कि 100 से 500 किलोग्राम्स के बीच में रहेगी। एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सैटेलाइट ऑपरेशन, राइट, इंक्लूडिंग ऑर्बिट रेजिंग, स्टेशन कीपिंग, डी ऑर्बिटिंग के लिए। इस सिस्टम को पावर किया जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा, जो कि एक ऑफर सेफर एंड मोर इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है टू द अदर टॉक्सिक फ्यूल्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं चाइना के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की। इन्होंने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया 5 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को इन स्पेस। जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना से इसको लॉन्च किया गया। एंड ये मार्क करता है 63rd स्पेस मिशन ऑफ चाइना इन 2024 एंड 551st फ्लाइट ऑफ द लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी होने वाले हैं। इसका 5th एडिशन होगा कहाँ पर? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में हमें देखने को मिलेगा, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये इवेंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। रिनोन्ड गुजराती सिंगर एंड पद्मश्री अवॉर्डी पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। 90 साल की एज में मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया।
1934 में खेड़ा गुजरात में इनका जन्म हुआ था एंड 2017 में इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। एंड पद्माश्री कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड इनको पद्माश्री इनका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में उसके लिए इनको सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई जो कि है न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 से 2024। इस बुक में मोदी जी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनका जो विजन है, इनकी जो स्कीम्स आई, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, उनके बारे में बताया गया है एंड इंडिया के प्रोग्रेस में उसका क्या रोल रहेगा उसके बारे में बताया गया है। इस इवेंट को अटेंड किया गया था नवनीत सिंगल जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन है प्रसार भारती के। एंड इस बुक ये जो बुक है इसको लॉन्च किया गया एट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एनर्जी, जो कि एंकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रीज को, ताकि वो सस्टेनेबल एनर्जी को प्रैक्टिस कर सकें। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। एंड इन्होंने 1991 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया था। यहीं पे अगर देखें तो महाराष्ट्र ने सिक्योर किया फर्स्ट प्राइज इन ग्रुप 1 ऑफ द स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड अंडर NECA 2024, वेयर एज कर्नाटका सेकंड प्राइज पे रहा। देन डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड फ्रॉम ओडिशा, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता सीमेंट सेक्टर में अंडर इंडस्ट्री कैटेगरी। देन रेनिनगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश अमरावती में है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी अंडर द रेलवे स्टेशन सेक्टर ऑफ NECA 2024। ये NECA क्या है? NECA है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं 53rd विजय दिवस पर। 16 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड विजय दिवस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुई थी उसमें जो हमारे लोग शहीद हुए थे, राइट, उनको ऑनर करने के लिए एंड इंडिया की जो विक्ट्री थी अगेंस्ट पाकिस्तान उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार 2024 में हमने इसका 53rd एडिशन ऑब्जर्व करा है, तो मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस वेटरन एक्टर को अभी ऑनर किया गया 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी? तो कौन है वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिनको हम मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं। ये 54th रेसिपिएंट बनेंगे इस अवार्ड के एंड 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित यहाँ पे किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी इनको ऑनर करने के लिए। एंड 2024 में ही मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखेंगे, पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको भी जॉइंटली अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इन 2024 फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए भी किनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया था? वो है गैरी ब्रूस रोवकुन को। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अभी अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन, राइट, एंड दिस इज फॉर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कि मशीन लर्निंग को हम कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कंबाइन करके उनको यूज कर सकते हैं। तो कौन रहेंगे? वो है जॉन जे हॉपफील्ड अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट, इनमें से किनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया? तो तीनों को, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉन कैंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला किस कैटेगरी में? तो लिटरेचर की फील्ड में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है एंड ये पहली वीमेन बनी है साउथ कोरिया से जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से। एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर एंड 1930 में इनको भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, वो कौन सी इकलौती IPS ऑफिसर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया 2024 के IACP 40/40 अवार्ड के लिए? ये अवार्ड दिया जाता है पुलिस की ब्रेवरी एंड कमिटमेंट एंड अच्छे से काम करने के लिए। एंड कौन है वो IPS ऑफिसर? वो है प्रीतपाल कौर। ये इकलौती इंडियन है इन 40 की लिस्ट में जो कि 6 कंट्री से अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे सेलेक्ट की गई एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकेडमी? वो है मुथुवल करुणानिधि स्टैलिन, जो कि हैं MK स्टैलिन। ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इनके जो कमिटमेंट है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट को अभी प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर सोसाइटी फॉर एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड के लिए। करेक्ट। तो किन को सम्मानित किया गया यहाँ पे, वो कौन सा एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में रहेगा। राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री के एनजीओ को अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 के, तो वो है जापान का एनजीओ। क्या नाम रहेगा एनजीओ का, निहोन हिदानक्यो। राइट। एंड इनका जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, ये उनका एक बेसिकली उन लोगों के द्वारा ये ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि हमें पीस को प्रमोट करना है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए, और इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द स्वर्गीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। इसी को हम नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये है डेरेन ए स्मुगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इन द फील्ड या फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम स्वेगीज रिस्क बैंक प्राइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किन को अभी ऑनर किया गया 2024 के यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट से। तो वो कौन है, वो है सिस्टर रोजिता मिलेसी। ये 79 एज की हैं, ब्राज़ीलियन नन है, लॉयर है एंड सोशल वर्कर है। एंड इनकी जो काम है, जैसे राइट्स, डिग्निटी ऑफ रिफ्यूजीज़, राइट, जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कराना, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ब्राज़ील में, उनको उनके राइट तक, उनको उनका राइट दिलाना, राइट, उनके जो भी चीज़ों से उनकी एक लाइफ अपलिफ्ट हो सकती है, उसके लिए उनको राइट तक उनका काम कराने के लिए इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, और इसीलिए इनको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द 48th वयालर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल कटू कडावू। तो किनको सम्मानित किया गया, वो है अशोकन चारुवेल। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बैग किया फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया, वो है ओडिशा ने। नेक्स्ट, who became the second woman from India and 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024। तो सेकेंड वीमेन इंडिया से एंड 10th इंडियन ये बनी। ये कौन है, ये रहेंगी नीतू डेविड। राइट। अभी 3 इंडक्ट किए गए हैं आईसीसी की हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 के लिए। वो हैं आपके एलिस्टेयर कुक 113th पोजीशन पे, नीतू डेविड 114th पोजीशन पे एंड एबीडी विलर्स आपके 115th पोजीशन पे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, होमवर्क पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी कितना अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया है यूपी में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। दूसरा, अभी रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना। थर्ड, किन को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल। राइट। एक और बता दो, फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में एक आईएनएस कमीशन किया गया है जो कि रशिया में किया गया था। राजनाथ सिंह की जब विजिट थी वहां पर, तब उस आईएनएस का नेम बताओ क्या है। तो ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। स्टूडेंट्स, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।